and the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord. Who has made heaven and earth, The Lord be with you. and with your spirit. Let us pray. God, our loving Father, you are Lord that the images of your Son, Mother Mary, and all the saints be painted or carved on, that all those who look at these images with their bodily eyes may receive all the blessings that are attached to it. Today we ask you to bless this flag of our Mother of Ilankini, as this flag raises up into heavens, and we gaze upon this flag flying and fluttering right on top of that flag post. May Mother Mary carry each one of us like that to Jesus, that where Jesus is, we may also be. So may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come upon this flag and remain with it now and forever. Amen. Holy water. வையத்து மாந்தர்கள் துயரம் தீர்த்திட உற்றவள் நீ அல்லவா? ஐயன் இயேசுவை வயிற்றில் சுமந்து பெற்றவள் நீ அல்லவா? ஐயன் இயேசுவை திருவயிற்றில் சுமந்து பெற்றவள் நீ அல்லவா? பெற்றவள் நீ அல்லவா? ஞானத்தை படைத்த தேவனின் தாயை உன் திருக்கொடி வானில் பறக்குதம்மா. Ave Maria. Loudly please. Ave Maria. மரியே வாழ்க, மரியே வாழ்க. நமோ மரியா, நமோ மரியா. மரியமே ஸ்வஸ்தி, மரியமே ஸ்வஸ்தி. ஏழை
गीत है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, हंसते गाते हम। My dear brothers and sisters in Jesus Christ, a warm welcome to all of you as we now prepare ourselves to enter into the Eucharistic celebration. We have just finished with the hoisting of the flag, and Mother Mary is installed in her position. And now we place ourselves and surrender ourselves to Jesus through Mary, interceding with her to bless all of you who have gathered here. I pray for all of you, trusting that Mother Mary may grant your good health of both body and mind. Remove all the fear that is there within us because of the pandemic. And Jesus has told us many a times, do not fear. That with that faith, we begin with the grand celebration and the novena that follows. Every day interceding with Mother Mary, that we may do whatever Jesus tells us to do. And all that Jesus tells us to do is love one another as I have loved you. So I pray for you and wait for you. We have this Holy Mass offered by the foreign family, all in thanksgiving to Mother Mary, and then praying for the departed souls. All masses offered in honor of Our Lady of Melancholy by Josephine Thomas and family, and for our brothers Edward, Alice, and Robinson. Joining in is Veronica, Kashi, Nair and family, Sachin, Chittur and family, by Basil and Maria, Melvin and Anita, by Frank and Priya, by Ashwin, and also by Jacinta, Daniel and family, by Moti, Anthony and family. Birthday celebration of Kashi, Varsagade, Mass offered by Arvind, Nailata and Amit. Thanks in Mass by Andrew Barnabas, by Annie Francis, by Julie and Benjamin, by Maria Xavier, by Gracie Tangamuthu and family, by Vincent Sebastian and family, by Cecilia Philip and family, by Grace, Jerry, Peter and family, also by Ambrose and family, by Selvaraj and family, by Surya Narayan and family, not forgetting the Thanksgiving Mass by Leonel, Purchase, Jessica, Jennifer, Sagai Mary, by Kit De Cruz and family, by Mark De Cruz and his family members, and by Moses De Cruz and family. And we pray for the healing of Josephine Thomas, Mrs. Pawar, Jennifer, Motin, Alfonso, Rita Fernando, Philomena De Silva, and we pray for all those who are sick. Then we have Mass offered for the soul of Rafael Tangamuthu on a death anniversary
by Gracie Tangamuthu and family. For Stephen and Oliver by Alice Gandhi. For Madhubala by Raven Pinto. For Victor and Nirmala by the Singarayan, Jyoti and Samson. For Rita Thomas by her children. For Ignatius and Philomena, Stanley and Agnes by Paru and Fatima. And we pray for Simon Tangamuthu by Gracie Tangamuthu and family. And we also pray for Jacob Simon, Mass offered by Annie Francis. And I pray for your intention. Whatever is your intention, I'm keeping a box in the church on tomorrow. You can drop in your intention and we pray for your intention every day. We shall now begin with our Eucharist. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. ये गीत हम लोग अक्सर गाते हैं. सुन लो माँ, बजाएगा क्या? वर्षित. सुन लो माँ, ये जहाँ आज करते तेरी स्तुति. सुन लो आज करते तेरी स्तुति. आज करते तेरी स्तुति. और गाते तेरी स्तुति. आज करते तेरी स्तुति. और गाते तेरी स्तुति. सुन लो आए जहाँ आज करते तेरी स्तुति. यार दोस्तों, इस माँ की जितनी स्तुति हम करेंगे वो काफी नहीं है. तो आज से हम लोग 8 तारीख तक बड़े ही विश्वास के साथ इस माता के पास प्रार्थना करेंगे कि ये हमें हर प्रकार की बुराई से बचा दे. आज संडे का भी दिन है. संडे की रीडिंग में हम सुनेंगे कैसे यहूदी लोग, फरीसी और स्क्राइब जीसस के बारे में प्रश्न करने के लिए आए हैं और अपने शिष्यों के बारे में कंप्लेन करते हैं. क्या कंप्लेन करते हैं आपको रीडिंग में सुनना पड़ेगा. हम लोग भी अक्सर बहुत चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं. घर वालों के बारे में, पड़ोसी के बारे में, उसके बारे में, उसका बारे में ना कंप्लेन करेंगे. तो उस सारे समय के लिए हम लोग प्रभु से क्षमा मांगेंगे. We confess together. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen.
Let us pray. God of might, giver of every good gift, pour into our hearts the love of your name, so that by deepening our sense of reverence, we may nurture in us what is good, and by your watchful care, give safe what we have nourished. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. First reading. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, O Israel, give heed to the statutes and the ordinances which I teach you, and do them, that you may live, and go in and take possession of the land which the Lord, the God of your fathers, gives us. You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Keep them and do them, for that will be your wisdom and your understanding in the sight of the people, who, when they
For what great nation is there that has a God so near to it, as the Lord our God is to us? Whenever we call upon Him. And what great nation is there that has statutes and ordinances so righteous as all His law, which I set before you this week? The word of the Lord. Thanks be to God. Your response to the psalm shall be, Lord, who shall be admitted to your tent? Kindly repeat. Lord, who shall be admitted to your tent? Lord, who shall dwell on your holy mountain? He who walks without fault, he who acts with justice and speaks the truth from his heart. Your response? Lord, who shall be admitted to your tent? He who does no wrong to his brother, who casts no slur on his neighbor, who holds the godless in disdain, but honors those who fear the Lord. Your response? Lord, who shall be admitted to your tent? He who keeps his pledge, come what may, who takes no interest on a loan and accepts no bribes against the innocent, such a man will stand firm forever. Your response? Lord, who shall be admitted at your tent? दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से है और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ उतरते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न ही कोई परिक्रमा, कोई अंधकार भी नहीं है। उसने अपनी ही इच्छा के सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया है, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। इसलिए आप लोग नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता बन जाए। पिता ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति के पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हमारे प्रभु यीशु मसीह
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. At that time, when the Pharisees gathered around Jesus, where some of the scribes were come from Jerusalem, they saw that some of the disciples ate with hands that were defiled, that is, unwashed. For the Pharisees and all the Jews do not eat anything unless they wash their hands properly, holding to the traditions of the elders. And when they came from the marketplaces, they do not eat unless they wash. There are many other traditions that they observe, such as the washing of the cups and pots, the copper vessels, and dining couches. And the Pharisees and the scribes asked him, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?" And he said to them, "Well, did Isaiah prophesy, you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain, but they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the traditions of men." And he called the people to him again and said to them, "Hear then, all of you, and understand. There is nothing outside a person that by going into him can defile him. But the things that come out of a person are what defile him. For from the evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness and deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these things come from within and they defile a person." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May the words of the Gospel wipe away our sins. Amen. अक्सर सारे मानव जो भारतवासी है अगस्त महीना के लिए रुके रहते हैं, जब हम लोग माता मरिया के विशेषकर वेलाक्यनी की नवीना प्रार्थना शुरू करेंगे। क्योंकि जो कोई भी माता मरिया के चरणों पर आकर प्रार्थना करता है वो कभी निराश होकर घर नहीं लौटेगा। लेकिन सारे विश्व में इतने सारे चर्चेस बने हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा चर्चेस के नाम माता मरिया के बाद ही है, क्योंकि हमारी एक ऐसी माँ है जिसके पास हम दौड़ कर जा सकते हैं हमारे जीवन के हर मोड़ पर। तब बात कर जाते हैं जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, कभी हमें तकलीफ हो जाती है, सब कार्य संपूर्ण नहीं होता है, बीमारी लग जाती है। जैसे हम लोग मानव लोग पहले जाते अपने माँ के पास, मम्मी को बोलते मम्मी ऐसा हो गया वैसा हो गया।
इसी प्रकार आप पिछले प्रजा एक माँ के पास आते हैं, एक ऐसी माँ जो प्रभु की माँ है। और ये माँ ने हमें कहा था काना के उस विवाह में जो प्रभु कहते हैं वैसा ही करो। तो आज विश्व के लिए प्रभु यही कहता है, जागते रहो, सावधान रहो, विश्वास करो, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ संसार के अंत तक चलता रहूंगा। लेकिन आज के गॉस्पेल रीडिंग में फरीसीज और स्क्राइब आते बोले, अरे तेरा शिष्य तो हाथ धोते नहीं, वैसा खाना खा लेते हैं। आप लोग हाथ धोते हैं क्या? कोरोना वगैरह इसके लिए हाथ धोते, सैनिटाइज करो, ये करो, वो करो, करते हैं। सरकार कहता है सैनिटाइज के बिना कुछ नहीं चलेगा, वैक्सीन नहीं लिया घर में बैठो। ये सब संसारिक नियम है। भगवान ने नहीं कहा हमें हाथ धोया क्या नहीं, ये सांसारिक नियम है। ये नियमों से डरो नहीं, डरो उस नियम से जो प्रभु कहता है, अगर तुम अच्छे कार्य नहीं करोगे, अगर तुम मेरा शरीर और रक्त स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपको आनंदित जीवन पाना मुश्किल हो जाएगा, कैमल भी चले जाएगा सुन के आम से। लेकिन हम लोगों को नहीं जमेगा बिना दूसरे के साथ प्रेम में रहते हुए प्रभु का स्वर्ग पहुंचने के लिए। डरिएगा नहीं, प्रभु सदैव हमारे साथ चलते रहता है, हमारे हर एक गुनाह को क्षमा करने के लिए तैयार है। जैसे माता मर गया, स्वर्ग पहुंची, वहां हमें भी पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए एक ही एक कार्य की जरूरत है। और प्रभु कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, वैसे ही तुम दूसरों से भी प्यार करो। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे। हर कार्य करेंगे कि उस व्यक्ति को हम कितना शांति दे सके, कितना मदद दे सके। अगर हम जिन्हें प्यार करते हैं, हम कितना देने के लिए तैयार है, तो हमें भी तैयार होना चाहिए प्रभु से भी वैसा ही प्यार करने के लिए, ताकि हमारे जीवन का अंत में प्रभु कह पाएगा, धन्य हो तुम, चले आओ मेरे साथ स्वर्ग में, मैंने आपके लिए बहुत सारा जगह बना के रखा। माता मरिया तो पहुंच चुके हैं वहां पर दोस्तों, कैसे पहुंच गए वो तो आप जानते हैं, क्या करके गई है वो भी जानते हैं। इतना जानने के बाद आपको क्या कर रहे हैं, ये नवीना में प्रार्थना करो कि हमारे घरों में भी वही प्रेम और शांति रहे, हमारे घरों में भी वही विश्वास और प्रार्थना रहे। क्योंकि कहते हैं जिस घर में प्रार्थना है वहां पर एकता है। और प्रभु ने कहा है, अगर तुम मेरा शरीर खाओगे और रक्त पियोगे, तुम्हें आनंद जीवन प्राप्त होगी। कितने लोग तैयार हैं इसे स्वीकार करने के लिए। चर्च बंद है, चर्च तो बंद रहेगा, सरकार ने बोला बंद करो, ये भगवान ने नहीं बोला कि मैंने चर्च बंद कर दिया। कभी तो भी आ जाओ, आके चर्च पे बैठो, प्रार्थना करो। अपने दोस्तों को कहाँ कहाँ नहीं जाते हम लोग मिलने के लिए, बाजार में किधर किधर जाते हैं। अच्छा है कि पुणे में बहुत सब खुला है, आप लोग वैक्सीन भी लिए हैं।
केवल चर्च के कंपाउंड में आने के लिए बहुत डरते हैं। भगवान के पास आना जरूरी है। तो इसलिए हमें सबों के लिए प्रार्थना करना भी जरूरी है। लेट अस प्रे फॉर ईच अदर ऑलवेज कि प्रभु आपको और मुझे आज तक सही सलामत रखा है। धन्यवाद दे दो उसको, धन्यवाद देते हैं दूसरे के लिए। हमारे परिवार से तो बहुत बिछड़ चुके हैं। उनकी गलती नहीं, हमारी भी गलती नहीं। जिन्हें जाना है वो चला गया, जो रह गया है उसे अभी सुधारना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। चलो आज से हम प्रार्थना शुरू करेंगे ये आरोग्य माता के पास, जो सबों को आरोग्य दिला दे, हमारे परिवारों को हर प्रकार के बुराई से बचा ले। हमारे परिवार में कितने लोग के काम चले गए हैं, बिजनेस डूब गया है। So let us with faith and trust that the Lord is going to do all things well. Trusting in that, we plead with Mother Mary to grant us the grace to always believe that the Lord will make all things good. Let us all stand and profess our faith together. All of us can say together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. we now place our petition in the hands of our Heavenly Father, trusting that He is going to do wonderful things for us. Your response to the prayer is, Lord, hear our prayer. Let us sing. Lord, hear our prayer. For our Holy Father, bishops, priests, and religious, that they may always guide and govern the Church based on the sound principles of faith found in God's Word. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For each of us who have begun this novena, that we may find solace and strength in the message of the Bible, and thereby live our lives as children of God. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our parish community, that even though we have been far away from each other for a long time, our bonds of fellowship may always be rooted in the message of the gospel. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all those affected by the pandemic, that the word of God may be the source of solace and consolation in difficult times. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. अब हम लोग अपने आप के लिए माता के पास प्रार्थना करें। Thank you, loving Father, for listening to our prayer. We are confident that with your will granted to our intercession and to the intercession of Mother Mary, we will receive all that we have prayed for. We ask this to Christ our Lord. Amen. Amen. Things in the past, things in the sea, wishes and dreams that are yet to come true. All of my
brethren, that my sacrifice and yours may become acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Amen. Receive, O Lord, we ask the prayer of your people with a sacrificial offering, that through the intercession of the Blessed Virgin, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request made in vain. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, eternal God. You have no need of our praise, yet our desire to thank you is itself your gift. Our prayer of thanksgiving adds nothing to your greatness, but makes us grow in your grace to Jesus Christ our Lord. And so with all the choirs of angels in heaven, we proclaim your glory and join in their unending hymn of praise. हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत रहे। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अपने आत्मा के संस्पर्श से इसे पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद ही देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख से उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर
तथा उसका रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। प्रभुवर हमारे शांत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मरक्षक थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्वभर फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, और उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र आत्मा साहित्या हे सर्वसमर्थ मिथ्या नम्र तुझा तुझा सम्मान तुझा गौरव सदा सर्वदा हो तुझा At the Savior's command and found by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our day, that with the help of your mercy, we may be free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance to your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace Peace with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ keep us safe for eternal life. Amen.
Lord Jesus, I believe that you are present in the Blessed Sacrament. I love you above everything, and I long for you in my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart, as though you were already come. I embrace you and unite myself entirely to you. Allow me not to be separated from you. Jesus, my good, my sweet and only love, inflame this heart of mine, that it may be always on fire for you. We have received this heavenly sacrament and beseech, O Lord, your mercy, that we who rejoice in the commemoration of the Blessed Virgin may by imitating her serve worthily the mysteries of our redemption. We ask this through Christ our Lord. Amen. Kindly sit down. Today we end in the 22nd Sunday of the church year. And I'd like to thank all those who helped us in preparing for the flag hoisting, and just reminding you that every day we are flag hoisting at about 12 o'clock, provided Perseus comes on time. Our choir is ready. 12 o'clock will be flag hoisting in the afternoon, and the same thing will be posted to you at 6 o'clock in the evening. Those who have come today, if you want to can give place to some other people. But come, those who have come, thank you for coming. But we are not inviting everybody in the parish. Please do not make an announcement of coming to the church. Those who want to come, let them come. Now you may, if you want to, book your masses for any day. Today we like to thank Josephine Basil Pinto for offering this sari to Mother Mary. We have got some more places vacant. If you like to offer sari, you can do so. But masses can be booked every day and for the whole Novena time. But masses should reach us by 11 o'clock in the morning so that we can offer that day. You can send your masses either to Perseus, to Lionel or to Judimus. And we can always see that gifts for the poor will be accepted for Vincent de Paul Conference. We like to offer rice, wheat, sugar, oil. You can come and leave it at the office. Church is always open throughout the day from 8 o'clock in the morning till 8 o'clock in the evening. You can come and pray, and you can also bring gifts for the poor and leave it at the altar. Vincent de Paul members will collect the same. But I would like to thank you for being good with us and for helping us to reach out to you through this Mass. And I should especially thank Ambrose and Selvaraj and Suryanarayan, Shingari. These are the ones who have been working a lot for this whole feast of today. And every day from tomorrow, we'll begin reciting the Novena prayer. But Rosary you must say at home. Rosary, Sunday Rosary, you say whenever you want. But Novena prayer and day's intention will be prayed by the team of us. And continue to pray for us as we pray for you.
So now let us all stand and we are going to sing the blessing hymn. You may join in singing only the Amen. Together. ईश्वर के पुत्र ने धन्य तुम्हारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया है। वही आप लोगों को आशीर्वाद देते रहे। जिंदन ने तुम्हारे दे द्वारा जीवन दाता प्राप्त हुआ है। उन्हीं के संरक्षण के द्वारा सदा सर्वदा शांति में जीते रहे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को सदा सर्वदा आप लोगों को प्रेम और शांति में आशीर्वाद देते रहे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। थैंक यू। फाइनल हिम। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो प्यारे दोस्तों, God bless you very much. Thank you for joining us. Be happy and be peaceful with your family. Thank you.